Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will discuss a very important topic, and the title of the topic is Business and Islamic Ethics. Now the title of the subject is very important, that is Business and Islamic. That is very important, Islamic Ethics. As far as the management is concerned, and I have been so much experience of teaching as far as the management concepts and subjects are concerned, I came to the conclusion that all the management principles and the leadership rules, they are directly or indirectly linked with Islam. And I'm not just telling it, I can prove it. There is a lot of research, and the latest theories regarding management and the leadership are, you can see, directly and indirectly related with Islam. So we will not only discuss the business and individual ethics, we will also relate it to the Islamic ethics. इन उर्दू एथिक्स को हम कहते हैं इखलाकियात, और इखलाकियात का जो सब्जेक्ट है, आई थिंक इस्लाम से ज़्यादा किसी भी रिलीजन में इखलाकियात और एथिक्स पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ जितना इस्लाम ने फोकस किया हुआ है. तो वी विल डिस्कस नो डाउट द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटल एंड बिजनेस एथिक्स, but we'll also relate it to, very importantly, to Islamic principles and Islamic ethics. Now let's first discuss the definition of ethics. It is a branch of knowledge that deals with moral principles guiding the behavior and conduct of an individual or society. There are many traditions of knowledge, and science is also one of the tradition which generates knowledge. So one of the branch of knowledge and information is ethics, which helps us and guide us regarding the moral principles. Now these moral principles are the base of ethics, and what these moral principles do, they guide us how to behave in the society, as an individual, and more importantly in the organization. So all these principles, moral principles, are related to this branch of knowledge, that is ethics. We can also say that ethics includes the rules and principles that define what is right and what is wrong conduct. Now students, this is very important. What is right and what is wrong? Ethics will guide us to identify the right and wrong things. We will discuss the different examples. It is not very easy to find out what is right and what is wrong. We will discuss the different examples, and you will feel that it is not very easy to find and to identify the right and the wrong things. We will discuss different examples also, why it is difficult to differentiate between right and wrong things. Some examples we will discuss in today's lecture, and in the preceding lectures we will discuss many other examples to differentiate and to identify the right and wrong conduct. The word ethics is actually derived from a Greek word which means custom, habit, and characteristics. So the branch of knowledge is ethics, and it will guide us how to behave as an individual and as a member of society, most importantly. Now ethics is again related to the philosophy. That is another branch, and it mostly deals with the social issue management. Now philosophy is very important subject, and ethics is directly or indirectly related with the philosophy. Now this philosophy of ethics helps us to find out the truth, to search the truth. As I told you that it is very difficult to search out the truth, to differentiate between the right and wrong things. And I tell you, we will discuss some different examples. Let's take an example that suppose you are selling an old car with some defect, and you want to sell this car. Now the defects are known to you, but the seller who is going to buy your car, he don't know what is the defect in the car. Now would you tell the purchaser about the defects in your car? Now this is very important. If you tell the purchaser about the defects in the car,
then the purchaser will not give you the good money for that. Now this is again important issue, whether we should tell those purchasers about these defects or not. Now ethically, as far as the ethics is concerned, we should tell the purchasers about these defects. But again, you will also think that you will get the less money for that. But as far as the ethics is concerned and good, the difference, what is the right and wrong thing, as a right thing, you should tell him about the defects. And एक इस्लामिक एक हदीस भी है, हज़रत रसूल की भी हदीस है कि आपने जब भी कोई चीज़ किसी को सेल करनी है तो उसकी खामियों के बारे में से ज़रूर बताएं. Now that is very important. Now again, there is a short-term thinking and there is a long-term thinking of management. बिकॉज जब आप शॉर्ट टर्म सोच रहे होंगे तो आप कहेंगे कि जब हम एक डिफेक्ट्स बता देंगे किसी चीज़ के परचेजर को तो वो आपको अच्छा जो है अच्छी ऑफर नहीं करेगा एंड ही विल ऑफर लेस मनी फॉर दैट. नो, दैट इज ए शॉर्ट टर्म थिंकिंग एंड यू विल फील इट दैट यू विल गेट द लेस मनी फॉर दैट. बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म इशू? as if you think about it the long term, that what repute you will earn in the eye of the customer or in the eye of the purchaser about you. He will feel good if you tell him about the defects of something. तो जो लॉन्ग टर्म रिप्यूट है वो आपकी इंक्रीज होगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी आपको डिफेक्ट बनाने में शॉर्ट टर्म थिंकिंग में तो आपको ये होगा कि आपको नुकसान होगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग को देखेंगे तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा भी हो सकता है. आपकी रिप्यूट इतनी ज़्यादा हो सकती है मार्केट में कि वो लोग द पीपल विल स्टार्ट ट्रस्ट यू अबाउट दीज थिंग्स. नाउ the same is true in the businesses, and we will also discuss the different examples in the businesses as well. Now again, let's take another example. Suppose you are conducting an interview in your organization as the chief executive, and there is a close friend and close relative who is being appeared before you for that interview. Now should you prefer that person because he is very close to you as a friend or as a relative? So again, you will be confused that whether you should prefer him or not. So again, you will have to differentiate what is the right and what is the wrong thing. As far as the ethics are concerned, you should not prefer it, and you should take your decision on merit and forgetting about your friend or relative, isn't it? Similarly, if there is a disabled person and you have to offer a job to the disabled person, so again you will feel that the disabled person may not be as active as the healthy person, and he will not be very efficient while performing his job. Now again, you will think that whether it is right or wrong, and you will be confused and you will have to take the decision. And the ethics guide us to take the good decisions in these sort of situations. Now again, let's take the example of the companies which produce and sell the cigarettes. Now, cigarettes, smoking is not good for health, but that company is producing the cigarettes and they are earning a lot of profit for that. Now, when the companies are asked that why you are producing that cigarettes when that smoking is not an healthier practice for the citizens. Now the company can give their own views that they don't force anyone to purchase their cigarettes, and as far as the business is good, as far as it is earning profit for you or for the company. So again, this is the situation. You will have to decide about whether you are doing the right or you are doing the wrong thing. So when we discuss these sort of examples, then in order to justify these sort of things, you'll have to reasonably give the different justifications. You'll have to tell the logic whether it is right or not. If it is right, then what is the logic behind? You will have to give the arguments in order to prove it as the right thing. And if you think that it is wrong, you will have to again give the justification with logic that why it is wrong. So this logic and this justification will help you
to say that some conduct is right conduct or wrong conduct. Let's take another example. Suppose कि आप रात को जा रहे हैं 2 बजे, रात 2 बजे किसी हाईवे पर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और आपको सिग्नल जो है हाईवे पे रेड मिल जाता है. अब whether you will stop on that red signal or not, ठीक है, it is your choice. Now you will have to think that whether you are doing the right thing or wrong thing. Now some people will give the arguments that they should stop because the red signal, it will be the violation of rule to cross that signal and you should stop there. But the other person may give their own arguments that suppose there's some problem in electricity and signals and you'll have to stop there and the signal will remain red there. यानी जब तक वो रेड है आप उधर खड़े होंगे, हो सकता है पीछे से उसका सिग्नल ही खराब हो, तो 2 घंटे आप उधर क्या खड़े ही रहेंगे. तो अगेन some people will say that you should cross the signal because there is no traffic, a sergeant is there and there is no harm, there is no cars around and there will be not any harm if you cross the signal. So whether you stop or whether you cross the signal, you can give your own arguments. And again, as far as the ethics is concerned, we will discuss different these sort of examples, especially related to the business, which will guide you that what is the wrong conduct and what is the right conduct. As I told you that ethics is the branch of knowledge which is mostly related to the philosophy as well. So Aristotle who was a great philosopher. He says that if your heart says that it's wrong, then it's wrong. And if your logic says it's wrong, then it's wrong. So he gives his own arguments to justify the right and the wrong things. Goods and bads are always there in this world, and we can check the reasonability about the right or wrong things. So right from the beginning, this world is always in the search of truth, and sometimes truth is not always the whole truth. So this effort will be continued forever by the human beings to in the search of truth, and there are different examples. I've already told you that crossing the red signal late night, whether it is right or wrong, then accordingly we can give the justification as I discussed about it. Similarly, selling an old car with some defect, again you will have to see that it is right or wrong. Preferring a friend or relative in interview, again it may be unethical. Giving job to the disabled person, producing and selling cigarettes. So you will have to give your own justifications if you say that all of these practices should be conducted as. Now students, let's take another example. That is the real example I'm going to share with you. There was a pharmaceutical company in some country, and they were producing medicine, and the name of the medicine was ivermectin. Now that medicine was being produced for fish near the sea areas. In some area of Africa, there was some disease in the fishes, and that disease was termed as river blindness. Now in order to cure the different fish and other animals like fish, they produced the medicine which was called as ivermectin, which cured this disease called as river blindness. Now जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, that was some African country I think, और ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उनके लिए ड्रग बना रही थी, और ये वो कंट्री थी जिधर द पीपल वर वेरी पुअर. जो फिशरमैन थे, जो मल्लाह थे, वो बहुत ही पुअर थे. वो मछलियाँ पकड़ते थे और अपना गुजारा करते थे. लेकिन उधर बीमारी जो थी मछलियों में बहुत ज़्यादा थी, तो उनको क्योर करने के लिए ये मेडिसिन बना रही थी कंपनी ना. उसके बाद कुछ सर्च हुई और उन्होंने सर्च ये हुई कि कुछ लोग जो मल्लाह थे, जो ये मछलियों का पकड़ते थे, उनमें ये डिजीज़ आनी शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है डेथ होनी शुरू हो गई लोगों की. तो पता चला कि यही वाली डिजीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसानों में मुंतकिल हो गई है. नाउ उधर जो डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब
इस कंपनी ने सोचा कि वेदर दे शुड मेक दैट मेडिसिन फॉर दोज पीपल। बाकायदा उन्होंने पूरा एक अपनी मीटिंग बुलाई और उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन उसका कंक्लूजन उन्होंने पहले ये निकाला कि ये जो मेडिसिन थी वो ह्यूमन बीइंग के लिए अगर वो बनाते तो दैट मे बी वेरी एक्सपेंसिव, और उधर के जो लोग थे वो इसको पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत गरीब लोग थे तो वो पे ही नहीं कर सकते थे। Now again, there was a lot of discussion among the different managers, among the different functional managers. उन्होंने कहा कि ये हमें नहीं बनानी चाहिए, लेकिन उसके एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक दफ़ा सबकी मीटिंग बुलाई और उन्होंने सबके आर्गूमेंट्स लिए। मार्केटिंग मैनेजर से पूछा, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर से पूछा कि whether we should go for making this medicine for the human being। लेकिन सबका जो आर्गूमेंट्स थे वो यही थे कि हमें ये नहीं बनानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लोग पे नहीं कर सकेंगे, हमें उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, एंड द कंपनी मे बी इन लॉस इन फ्यूचर। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के माइंड में आई थिंक पता नहीं क्या आया, उन्होंने आखिर अपना डिसीजन दिया कि लेट्स मेक इट फॉर द ह्यूमन बींग्स। हमारी कंपनी को जितना मर्जी लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन हम ये मेडिसिन ह्यूमन बींग्स के लिए बनाएंगे। नो अपेरेंटली अगर जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग मैनेजर्स और जो थी अभी जो मैंने डिस्कस किया था, वो तो हमेशा हमारे माइंड में यही आएगा कि इनको इतना ज़्यादा नुकसान होगा और कंपनी डूब जाएगी फ्यूचर में। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने ये मेडिसिन बनानी शुरू की और लोगों को क्योर होना शुरू हुआ, तो बिगनिंग में उनको ज़ाहिर नुकसान भी हुआ, लेकिन जब ये न्यूज़ जो है वर्ल्ड की मीडिया में गई तो ये कंपनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई विद रिस्पेक्ट टू द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, विद रिस्पेक्ट टू द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी का शेयर इतना ज़्यादा हो गया कि वो बहुत ज़्यादा आखिर में जाके प्रॉफिटेबल हो गया, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। नो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि शॉर्ट टर्म में जब हम सोच रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि कोई इस किस्म की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं या सोशल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नुकसान होगा, लेकिन आपको नुकसान नहीं होता, लॉन्ग टर्म में जाके आपको फ़ायदा हो रहा होता है। जैसा मैंने अभी हमने डिस्कस की कि एक चीज़ को आपने सेल करना है और उसकी डिफेक्ट्स आपको बता देंगे तो आपके माइंड में ये आएगा कि आपको लोग पे नहीं करेंगे उसका अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी रिप्यूट इतनी ज़्यादा हो जाएगी, हो सकता है आपके कस्टमर आपकी रिप्यूट को देखकर आपके पास इतने ज़्यादा आ जाएं, एंड द कंपनी मे बी वेरी मच प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर। So this is the difference between the short-term thinking of the managers and the long-term thinking of the managers. And always keep in mind, these ethical decisions are always the long-term sort of decisions, and the company always, prosper in the future on the basis of these ethical decisions or the right decisions. So this was an important case study. I will discuss you in detail in some other lecture, but at this point, I just give you the idea that sometimes it is very difficult to take these sort of ethical decisions with respect to the business point of view or with respect to the profit point of view. But long-term thinking के लिए these decisions are very important, and इसका नुकसान नहीं होता लॉन्ग टर्म में, फिर इसका फायदा होता है कंपनी को भी और मैनेजर्स को भी, द डिसीजन मेकर। Now, class, let's discuss some unethical business practices which are being offered in the different organizations all over the world. बहुत सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। मैनेजर्स लाइंग टू द एम्प्लॉयज। अक्सर आपने देखा होगा कि कंपनीज में जो मैनेजर्स है वो अपने एम्प्लॉय से ही झूठ बोल रहे होते हैं और एक ट्रू पिक्चर उनको नहीं दिखा रहे होते फॉर द वन रीजन और द अदर। So again, that is the unethical practice, and you should tell always the truth to their employees. Then favoritism and nepotism को हमने डिस्कस किया, nepotism and favoritism। नाउ ये वही बात है कि आप फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा हो रही होती है प्रमोशन में, आपके इंटरव्यूज़ में, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट में। तो अगेन दिस सॉर्ट ऑफ फेवरेटिज्म अगर होगी, नेपोटिज्म होगी, तो डेट इज़ कंसिडर्ड एज द अनएथिकल प्रैक्टिस, और ये बहुत ज़्यादा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और that should be considered as the unethical business practice. Taking credit for others' work, and that is again very important. एक बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा रहा होता है, अब सबऑर्डिनेट मेहनत कर रहा है और सारी मेहनत जो है बैक एंड पे वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसका क्रेडिट जो होता है अपना आपका बॉस ले जाता है, तो अगेन that is again can be the unethical practice. रिसीविंग ऑफरिंग किकबैक्स हम बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, लोगों की टांगें खींच रहे होते हैं, हमेशा आगे से आगे निकलने की जद्दोजहद में हम दूसरे लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगेन दैट इज दी अनएथिकल प्रैक्टिस। स्टीलिंग फ्रॉम द कंपनी, समटाइम्स हम स्टील करते हैं, ये तो लीगली भी और एथिकली दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिसेस। देन फायरिंग एन एम्प्लॉय फॉर विसल ब्लोइंग को हम डिस्कस करेंगे
कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है अगर किसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में अपनी हायर मैनेजमेंट को बता देता है, तो उसकी इस शिकायत या इस कंप्लेंट के अगेंस्ट अगर हम उसको नौकरी से फारिग कर देंगे, तो अगेन दैट विल नॉट बी दी राइट प्रैक्टिस और एथिकल प्रैक्टिसेस। इसको हम विसल ब्लोइंग को एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पैडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट्स, एक्सपेंस में अगर हम अपनी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको इस तरीके से शो करें कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट शो हो रहा हो कंपनी को, ताकि बैंक्स आपको लोन दें। तो whether these padding practices with respect to your accounts, that is again the unethical practice. Divulging confidential information और ट्रेड सीक्रेट्स, अगर आप अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरों को बता देंगे, अपनी कंपनी की अपनी बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने कॉम्पिटिटर को बता देंगे या बाहर किसी को बता देंगे, तो अगेन दैट इज द अनएथिकल प्रैक्टिसेस। टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट विदाउट सफिशिएंट नोटिस, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक दिन पे एक नोटिस पे आप एम्प्लॉय को निकाल देते हैं अपनी नौकरी से, तो अगेन दैट इज अगेन द अनएथिकल प्रैक्टिस। और अच्छी जो कंपनीज होती हैं उनका बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद आप टर्मिनेट करते हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट को। यूजिंग कंपनी प्रॉपर्टी मटेरियल फॉर पर्सनल यूज, अगेन दैट इज, अगर आपके पास सपोज के ऑफिस का कंप्यूटर है तो उसको हम धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से ऑफिस की प्रॉपर्टी को हम बड़ी केयरलेसली यूज़ कर रहे होते हैं। यही अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, अपना प्रिंटर हो, तो उसको बहुत ही केयरफुली तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगेन यूजिंग द कंपनी प्रॉपर्टी एंड द मटेरियल फॉर द पर्सनल यूज, दैट इज अगेन अनएथिकल प्रैक्टिसेस। So I just want to discuss the different unethical practices which are being prevailed in the different organizations all over the world. Again, our research showed that the different unethical practices, कि सबसे ज़्यादा जो unethical practices हो रही होती हैं, ये रिसर्च ये शो कर रही है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो रही होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। तो कुछ प्रैक्टिसेस अगेन हमने डिस्कस की कि हम जो है अगर हम ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे, अपनी ऑफिस की प्रॉपर्टीज़ को हम जो है केयरलेसली यूज़ करेंगे, तो अगेन दीज आर दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो इसकी गवर्नमेंट की जो और इसी तरीके से फेवरेटिज्म में अगर हम कोई रिक्रूटमेंट हो रही है, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है हमारे, स्पेशली पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट मे बी देयर, तो दैट इज़ अगेन दी अनएथिकल प्रैक्टिसेस। इसी तरीके से सेल्स में बहुत ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। अभी जो आज हमने अभी एग्जांपल डिस्कस की कि आपने कोई सेल करना है प्रोडक्ट किसी को, उसके डिफेक्ट आप नहीं बताएंगे, तो अगेन दैट विल बी दी अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो सेल्स में बहुत ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस इस वजह से हो रही होती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट। आप जो है बहुत झूठ भी बोल रहे होते हैं और बहुत ही अपना बढ़ा चढ़ा कर उसको पेश कर रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा टीवी में भी एडवर्टीजमेंट आ रही होती है और उसमें ऐसा लगता है जैसे इससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट कोई दुनिया में है ही नहीं, लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कंप्लेंट्स भी आती हैं, उसमें आपको पता चलता है व्हाट आर द डिफेक्ट्स। सो फॉर द लॉन्ग टर्म जो है इसका अगेन नुकसान होता है कंपनी को। लॉ जो है डेट इज़ अगेन उसमें भी बहुत सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, बहुत से हमारे रूल्स ऐसे बने होते हैं विच आर समटाइम्स अनएथिकल, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एथिकल चीज़ें होती हैं और कुछ लीगल चीज़ें होती हैं। और द मैनेजर्स जो है दे आर ऑलवेज इन द सर्च ऑफ फाइंड आउट द ग्रे एरिया, कि उसको वो एरिया मेरे जो लीगल भी हो और जो एथिकल भी हो। ये बहुत सी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे समटाइम्स आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल्स अभी पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं, बहुत ही पुराने रूल्स हैं जो कभी किसी ने चेंज नहीं किए। तो वो अब उस वक्त बेशक वो एथिकल होंगे, लेकिन हो सकता है आजकल के ज़माने में, IT के ज़माने में और इतनी प्रोग्रेस वाले ज़माने में डेट में भी अनएथिकल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मीडिया अगेन यू नो that is very important when we discuss these ethical and unethical practices. मीडिया आप रोज़ देखते होंगे, खबरें देख रहे होते हैं कि बाद बात छोटी सी चीज़ होती है और उसको वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं, और बाद बात बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है और उसको बिल्कुल ही एक छोटी सी हेडिंग देते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंसिटाइजेशन ऑफ द माइंड्स ऑफ द सिटीजन, यू नो। तो उसमें मीडिया का रोल अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं और आपके नॉलेज में हैं। फाइनेंस में अभी हमने डिस्कस किया, अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ लोग विंडो ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से शो कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल शो हो रही होती है आपकी कंपनी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में। तो अगेन दैट इज़ दी अनएथिकल प्रैक्टिसेस।
मेडिसिन अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अक्सर आपने देखा होगा कि मेडिसिन पाकिस्तान में आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास जाते हैं या किसी केमिस्ट के पास जाते हैं तो जो मर्जी मेडिसिन उसको लिखें हैं, आपको एंटीबायोटिक भी वो दे देते हैं और बाकी चीज़ें भी दे देते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर किसी यूरोप की कंट्री में जाएं या किसी एडवांस कंट्री में जाएं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परचेज दीज सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर्स। वेरी डिफिकल्ट आई एम टेलिंग यू। लेकिन अगेन हमारे यहाँ ये दे रहे होते हैं, फिर साइड इफ़ेक्ट्स बाज़ दफ़ा नहीं बताते, या कुछ मेडिसिन में अगर वो अक्सर आपने देखा होगा यूजुअली मेडिसिन होती है तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो भी बताते हैं, तो डेट इज़ एथिकल प्रैक्टिस। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी और विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आप मेडिसिन दे रहे होंगे और तो डेट विल बी कंसिडर्ड एज दी अनएथिकल प्रैक्टिस। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट किसी के डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे होते हैं हमारे पेशेंट्स को, नर्सिस को, बहुत सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस विच आर unethical from the individual point of view as well as from the business point of view। तो ये एक रिसर्च की बेस पे ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन एरियाज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। नाउ इनको हम डिस्कस करेंगे फर्दर इन द प्रोसीडिंग लेक्चर्स अबाउट द फर्दर एथिकल एंड अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। सिमिलरली बैंकिंग में बहुत ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस समटाइम्स हो रही होती हैं। लेट्स गिव यू एन एग्जांपल अबाउट दैट। अक्सर आपने देखा होगा, पहले तो ये होता था, आई डोंट नो कि अभी होता है कि नहीं होता, कि अगर आप सपोज कि कोई क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो आपको स्टेटमेंट एक दे देते हैं। अब उसमें बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी अच्छी लिखी होती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं आपने शायद फील किया हो या ना किया हो, बट मेरे साथ ये हो चुका है, वो बहुत ही स्मॉल फॉन्ट में लिखी होती हैं। वो इतना यानी अगर बाकी पेजेस पे जो ये बाकी पेपर हैं वो अगर उन्होंने 12 का फ़ॉन्ट लिखा हुआ है या 14 का फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हो सकता है 6 के फ़ॉन्ट में लिखा हो, जो पढ़ा ही नहीं जाता और वो अक्सर लोग पढ़ते ही नहीं हैं और साइन करके क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं या इस किस्म के कार्ड परचेज कर लेते हैं। जब वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो पता चलता है कि बिल में हिडन चार्जेस आ गए हैं। दोबारा बैंक वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन की हुई हैं ना। वो टर्म्स एंड कंडीशंस अब वो ठीक कहते हैं, लीगली तो वो ठीक कह रहे हैं, इट इज़ लीगल कि वो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल लिखी होती हैं और साइन भी करवाए होते हैं। लेकिन एक इश्यू जो इसमें डिस्कस करने वाला है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन इतनी स्मॉल फॉन्ट में लिखी होती हैं कि समटाइम्स आपको उसमें पढ़ा ही नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ी जाती हैं वो। तो दैट इज़ एथिकल और अनएथिकल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगल होती हैं लेकिन वो एथिकल नहीं होती। ये एक उसकी एग्जाम्पल है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी। ये लीगल तो है, उन्होंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं लेकिन वो इतने स्मॉल फॉन्ट में लिखी हुई हैं तो दैट इज़ अनएथिकल। बैंक वाले तो ये कहेंगे कि ये दैट इज़ ए लीगल थिंग, हमने आपने साइन किए हुए हैं और वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है दिस इज़ नॉट द एथिकल प्रैक्टिस। सो यही हमने इन द बिगनिंग डिस्कस किया था कि समटाइम्स कुछ चीज़ें लीगल होती हैं लेकिन अनएथिकल होती हैं और कुछ चीज़ें समटाइम्स अनएथिकल होती हैं और एथिकल होती हैं लेकिन वो इलीगल होती हैं। तो मैनेजर्स जो है दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द ग्रे एरिया विच इंक्लूड्स बोथ द लीगल एंड ethical practices। So again this was the example just to tell you कि आप sometimes आपको difficult होता है कि what is the right and what is the wrong practices within the organizations। Similarly मैन्युफैक्चरिंग जब आप कर रहे होते हैं, अक्सर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में आपने देखा होगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं और उसके डिफेक्ट्स आ जाते हैं प्रोडक्ट में और वो शो नहीं करते या उसको बस उसी तरीके से सेल कर देंगे अपने कस्टमर्स को। डेट इज अगेन दी रॉन्ग प्रैक्टिस। अच्छी जो कंपनीज होती हैं अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी सेल नहीं करती अपनी कस्टमर्स को, और अगर गलती से वो इनको सेल कर भी देती हैं तो अगर उनको पता चल जाए लेटेस्ट स्टेज में भी कि ये डिफेक्ट है प्रोडक्ट में वो तो वो वापस मंगवा लेती हैं। इसकी बहुत सी केस स्टडीज़ हैं, लाइक आई थिंक टोयोटा वालों के साथ ऐसा हुआ था कि कुछ उन्होंने कार्स मैन्युफैक्चर की और उन्होंने मार्केट में सेल भी कर दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लेकिन कुछ अर्से बाद पता चला कि उसकी ब्रेक में कोई डिफेक्ट था। अब उन्होंने पूरी जो उन्होंने सेल की हुई थी उन जो भी उनके पास कस्टमर थे अपने एजेंट्स को या जो उनके लोग थे उनके पास उनको भिजवाया और वो डिफेक्ट उन्होंने दूर किया। अब अगर वो ऐसा ना भी करते तो वो लोग चला रहे थे और किसी को पता भी नहीं था कि शायद डिफेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको फील किया कि हम जो कस्टमर को हमने जो चीज़ ऑलरेडी सेल कर दी हुई है अगर उसमें भी डिफेक्ट आता है
जो हमने उनको नहीं बताया या उनको अनकॉन्शियसली वो चली गई, सेल हो गई, उन्होंने उसको भी रिमूव किया. So that is, these sort of practices create a sort of repute for that company all over the world. So these were some unethical business practices. Now, as far as the ethics are concerned, there are different levels of ethics. This can be the individual ethics, यानी एक इंसान के ethics क्या होते हैं. आप अपनी फैमिली में किस तरीके से बात करते हैं, कौन क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है. आप मार्केट में जा रहे हैं, शॉपकीपर से किसी के से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी किसी लोगों के साथ डील कर रहे हैं. ऑल दीज आर दी सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल एथिक्स. तो इसका जो वेरी बेसिक लेवल होता है एथिक्स का, दैट इज द इंडिविजुअल एथिक्स. द सेकंड जो इसका लेवल है, हायर लेवल, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स और द बिजनेस एथिक्स. यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हाउ यू शुड बिहेव एंड हाउ यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग प्रैक्टिसेस. कुछ एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस की. So throughout this semester, we will discuss that what are the different organizational ethics. Then the third level of business ethics is the association level. If there are some association at the industry level or at some other level, and there can be the different ethical issues which should be followed by those associations. The next and the most important level of business ethics is the societal level. As a whole society, there are some obligations on all the individuals and all the citizens of a country as far as the overall society is concerned. And similarly, there are some international ethics. There are some issues and there are some practices which should be followed by all the individuals irrespective of their country and nations. So all these are the different levels of ethics, and we will discuss all of these issues with respect to all of these levels in the proceeding lectures. Now class, business ethics and the changing environment, that is very important. And the other issue is the stakeholder management. The book which I recommended you in the previous lecture, that is the business ethics and its relationship with respect to the stakeholder management. So we will discuss all of these issues in detail, but that environment is very important. And ethics may also change with respect to the changing environment. Now, what is environment? Environment from the business point of view and from management point of view, it includes all those forces which can affect your organization directly or indirectly. Again, I am telling you all the forces which can affect your organization in one way or the other. All those forces are considered as the environment of the organization, and these environments change. There are the different types of environments. That is the external environment, internal environment, task environment, or the competitive environment. We will discuss these environments in detail, and I will send you the lectures related to the organizational environments, and you will have to go through these lectures in detail, and then we will discuss the most important environment with respect to this subject, that is the ethical environment and the social environment in detail. Stakeholder is any person or any entity which has direct or indirect relationship with your company. Your banks are the stakeholders, your customers are the most important stakeholders, your shareholders who have the shares in your company or the business, they are your stakeholders. So these are they can be the primary and they can be the secondary stakeholders. And we will discuss this business ethics subject with respect to stakeholder management, and that is related to the title of the big book I have recommended you.